Hello friends. So we are live again and today's topic is power of self. जैसा कि एक कहावत हमने सुनी है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज हम उस खुदी के बारे में बात करने वाले हैं। वो खुदी जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है, वो खुदी जो हमारे अंदर है, जो हमारी अपनी पहचान है और हम उसे अच्छी तरीके से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। एक कहावत है, किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा है, नोइंग सेल्फ इज इम्पोर्टेंट देन नोइंग अदर्स। अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जान लेते हैं, अर्थात अगर आप अपनी खुशी और अपनी शांति के बारे में क्या चीज है जो आपको खुश रख सकती है या क्या ऐसी चीज है जो आपको शांति प्रदान करती है, अगर आप इन व्यक्तित्वों को अच्छे तरीके से जान सकते हैं, अपने बारे में पहचान कर सकते हैं, तो आपसे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा। अर्थात जब हम खुद को जानते हैं तभी हमें पता लगता है कि हमारी क्या विशेषताएं हैं, क्या ऐसे सक्षम तरीके हैं जो हमारे को दूसरों से भिन्न करते हैं। What are my unique identities? What are those things which make me unique from other people? And my daily reflection and meditation can help me guide or gain a better insight of my true self. अपने आप को जानने के लिए हम या तो अपने व्यक्तित्व को पूरी भली भांति देखें, उसके ऊपर विचार करें, या हम मेडिटेशन के तौर तरीकों से उसको बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं और हम हर उस चीज को पा सकते हैं जो हमारे लिए, मेरे ट्रू सेल्फ के लिए जरूरी है। उसको जानने के लिए हमें सिर्फ अपने आप को जानना है। By telling us knowing yourself, we mean to say recognizing the different parts of your own identity, different parts of your personality, different areas of your personality and your being. जब हम कहते हैं कि हम अपने आप को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, तो पहला प्रश्न जो आता है वो है, क्या हम वाकई में अपने आप को जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारा आइडेंटिटी क्या है, मेरी पर्सनालिटी क्या है, या मैं हूं कौन? जब हम इन बारे में जानते हैं तभी हम ये भी जान सकते हैं कि क्या ये मैं हूं बेहतरीन तरीके से, या मैं किसी को एडमायर करता हूं और मैं उसके जैसा बनने की कोशिश करता हूं। Isn't that we are trying to copy somebody, or this is my true self? अब ये जानने के लिए तो हमें बेहतरीन तरीके से जानना होगा कि who I am, or to get to know better self of your own self, there are various methods. The first method which work in this way is gaining or practicing self-awareness. Second method is exploring your personality. Third is fulfilling your needs. जब हम कहते हैं practicing self-awareness, अर्थात अपने आप को टटोलना, अपने आप को जानना, और we are going to note down the steps. सबसे पहले हमारे को ये जानना जरूरी है कि हम हैं कौन, हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले है, we need to learn to be honest with our own self. दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि हम झूठ बोल रहे हैं, या हम ये नहीं कह रहे कि हम आसपास के लोगों से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या हम जब अपने आप से वार्तालाप करते हैं, जब हम अपने आप से बात करते हैं, तो हम कितना सत्य, कितना अपने आप के बारे में पहचानते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अपने आप को क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाउ टू नो
all sides, acknowledge all sides of your personality. कई पॉसिबिलिटीज होती हैं जहां हम अपने बारे में नई चीज जानते हैं. कई बार होता है हम अपने बारे में जानते हैं, यार मैंने उस पॉइंट पे मैंने ऐसे क्यों रिएक्ट किया, वहां पे क्या चीज थी, क्या ऐसी चीज थी जो मेरे को उस व्यक्ति की बात बुरी लग गई, मुझे क्यों बुरी लगी, उस व्यक्ति का आना मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील कराया, ऐसा क्यों हुआ. These are those emotional signals which are telling us that कहीं हम उस टॉपिक को या किसी मुद्दे को हम अवॉइड तो नहीं कर रहे, या किसी चीज के भावनात्मक भावना से हम अपने आप को इनसिक्योर तो नहीं फील कर रहे. और अगर ऐसा कोई चीज आता है, ऐसा कौन सा स्टेप हो सकता है जिसको मैं अपनाऊं तो मैं उस पॉइंट को, उस चीज को ओवरकम कर सकता हूँ, मैं उस मुद्दे से बाहर निकल सकता हूँ. और अपने आप के बारे में ये जानने का बहुत अच्छा तरीका है कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है. जैसे अ लेडी गोज इनटू फ्रंट ऑफ मिरर और वो घबरा जाती है मिरर्स के सामने जाने से. तो ऐसा क्या है कि वो मिरर के सामने नहीं जाना चाहती? क्या उसे डर लग रहा है, या वो इनसिक्योर है अपनी लुक्स को लेके, या उसकी बढ़ती हुई एज उसको दिक्कत दे रही है. एंड once we are able to understand the fear, we can conquer it. Self awareness step number 2. Ask yourself thoughtful questions. This is one thing which I love to do, because this knowledge helps us realize what makes me happy or what makes me stressed. ऐसा कौन सी चीज है जो मुझे बहुत खुशी दे, और ऐसी क्या चीज है जो मुझे एकदम डिप्रेस्ड फील करा रहा है, एकदम एनॉयड फील करा रहा है, एकदम इरिटेट करता है. और जब मैं ये थॉटफुल क्वेश्चंस पूछता हूँ तभी ये आंसर निकल के आते हैं. ये थॉटफुल क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, लाइक आपको क्या अच्छा लगता है, आपके सपने क्या हैं, what are your goals, what you want to be your legacy, what is the worst criticism of you, are there any mistakes. हम लोग सब मिस्टेक्स करते हैं. How many times we try to realize them. How you perceive your own self. आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, या आप कैसा चाहते हैं कि दुनिया आपके बारे में सोचे, और क्या आप उसको अचीव कर पा रहे हैं. एंड माई बेस्ट एंड माई फेवरेट, who is your role model? I'm not going to disclose that. Self-awareness step number 3. Pay attention to your inner voice. अंतर्मन की सुनो, अंतरात्मा की सुनो. कई बार हम बात करते हैं अपने अंदर के बच्चे को जानो. Know your inner child, know your inner self. लेकिन कितनी बार हम उस inner voice को सुनते हैं? हमारी inner voice का मतलब है the expression what we feel and believe in. But how many times we actually feel that I am listening to something. Listening doesn't mean that we are audibly listening. It can be something which frustrates me or delights me. And that feeling might be telling me something. That is the inner self trying to guide me. That you are getting frustrated because of this particular thing. Are we tuning to our inner self to understand these points? Are we really listening to the inner self? In these kinds of moments, we need to go and talk to our own self and try to understand that what is the matter, what is that my body or my inner self is trying to tell me, how much attention I am putting onto it, what is my inner self is trying to perceive about the environment around me at that particular moment, and is it very loud in my head that something is coming to me?
Is it describing something about me? Are the descriptions positive or negative? How are they coming onto me? And if they are negative, then we need to look on the points. Are these things talking about success or failures? If it is about failures, we need to understand and we need to take proper action. So, these negative thoughts or positive thoughts actually define how we see ourselves in a particular situation or condition. And if this personal image is not aligned with where I want to be, then we need to take steps to improve ourselves as a person, and as well as we need to understand to learn new traits about our own self. The favorite topic about step number 4 is journaling. जर्नलिंग हमेशा एक बहुत ही ज़रूरी है. Journaling help us recognize my motivations, my emotions, beliefs, so that we can make thoughtful adjustment in our life. हम उन जरूरी पलों को, उन जरूरी यादों को, उन जरूरी पॉइंट्स को संजो सके, जो हम जान सकें कि मैंने पूरे दिन में आज क्या किया, क्या थॉट्स थे मेरे माइंड में, what was my feeling about particular actions, how I act in a particular situation, and if there is a negative experience, why that negative experience affected me, what was negative about it, so I can make a note and I can be a better myself. This journaling process is also going to help me understand the patterns of my writing. अब over the time हम लोग बहुत गलतियाँ करते हैं. Over the time हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी लिखते हैं जो रिपीटेड हो रही हैं, और जब हम रिपीटेड पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे, जब हम कुछ समय अपने पैटर्न्स को पढ़ने में लगाएंगे, तो हमें पता लगेगा कि देयर इज समथिंग विच इज हॉन्टिंग मी और विच इज ट्रबलिंग मी डेली, और देयर इज समथिंग विच आई एम डूइंग डेली विच डिफाइंस माई नीड्स एंड माई डिजायर्स. जब मैं अपनी नीड्स एंड डिजायर्स को जान पाऊंगा, तभी मैं अपनी पर्सनैलिटी को, अपने पर्सोना को एक बेहतरीन रूप में जान पाऊंगा. We can also write whatever is in my mind, whatever thought, whatever thing is coming, because free writing is going to unlock the new avenues. मेरे पास बहुत कुछ आ रहा है, मेरे पास बहुत कुछ आ रहा है जो सबकॉन्शियस थॉट्स कहते हैं, और जब हम इन सबकॉन्शियस थॉट्स को करते हैं, रीड करने की कोशिश करते हैं, या जब हम जानने की कोशिश करते हैं, there are so many things which are bothering me daily. हम कहते हैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन जब हम इनको नोट डाउन करते हैं, हमें पता लगता है कि ओके, माय बॉडी और माय इनर सेल्फ इज टॉकिंग टू मी इन अ पर्टिकुलर वे, इट इज ट्राइंग टू गाइड मी इनटू अ पर्टिकुलर वे, सो आई नीड टू टेक प्रॉपर एक्शन इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया. We also can use various prompts. Prompts are like which are going to describe my certain personality or habits. Step 5. It is about incorporating mindfulness. Mindfulness. As soon as I listen about mindfulness, the thing come to my mind is meditation. Go deep and relaxation. But friends, mindfulness is not only meditation. It is about including many other activities or many other practices into it. Most importantly, for me, meditation or mindfulness is a state of attention to yourself and the world you are experiencing. Mindfulness means to know about you, what you are doing, and how you are doing, and for why you are doing. Take a moment and check in with your 5 senses what you are touching, tasting, hearing, seeing, and smelling. If I am touching something, it is to eat, we are tasting something. If I can hear like कुछ गर्म platter आता है, there is a sound, so I can make out that how warm it is.
I can feel the warmth, I can see it, I can smell it. So we need to use all the senses, and with the moment we need to work on with everything we are working. आजकल हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो है बच्चों की हमने आदत बना दी है टीवी देखते हुए, कार्टून देखते हुए खाना खाना, या हमारी खुद की आदत है काम कर रहे हैं साथ में चाय पी रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं. We are not limiting our time to food or something. How will we take that time? जब तक हम वो ब्रेक नहीं लेंगे खाने का, how we can give our five senses complete attention. So mindfulness means giving attention to everything you are working on. And remember me, my friends, that the way we do one thing in our life, we do everything in our life. तो बेहतर यही है कि हम सबसे पहले अपनी एसेंशियल एक्टिविटी जो कि ईटिंग है उसमें एक माइंडफुलनेस डालें, उसमें हम पांचों सेंसेस का पूर्ण उपयोग डालें, ताकि हम टीवी देखते हुए या कंप्यूटर पे काम करते हुए या बुक रीड करते हुए या कोई अदर काम करते हुए अपना खाना न खाएं. हम जो भी काम कर रहे हैं उससे ब्रेक लें और खाना खाएं, so that we can know the taste, we can know the texture, temperature and sensation of each bite of the food. Take few minutes every day to just pause and observe the world around you, the environment around you. We are running. हम भागम भाग की जिंदगी जी रहे हैं, हमें भागने में बड़ा आनंद आ रहा है और उस भागम भाग की जिंदगी में हम हसीन पलों को इग्नोर करते जा रहे हैं. कई बार होता है एक गाय का बछड़ा ही कितना सुंदर होता है, या बगिया में खिला वो गुलाब का फूल हमें शांति दे रहा होता है, लेकिन हम भागम भाग भरी जिंदगी में उनको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते और हम उन सेंसेशंस को बोलते हुए ये चिड़िया का चहचहाना, वाटरफॉल के पास जाना. अब वाटरफॉल के पास जाके हम कंप्यूटर लेके तो नहीं बैठते. आजकल तो हम एक ही काम कर रहे हैं, बस सेल्फी लेनी है जी वाटरफॉल के पास जाके, हमें वर्ल्ड को शो करना है. बट वी हैव फॉरगॉटन टू एंजॉय द थिंग्स. जब हम उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, जब हम उन चीज़ों को रिलिश करेंगे, तभी तो वो मोमेंट्स हमारे अंदर आएंगे. हम घूमने क्यों जाना चाहते हैं? लोगों को दिखाने के लिए या हम अपनी खुशी के लिए जाना चाहते हैं? What is my emotional reaction to it? Question yourself that. Why do you feel in a particular way? Question yourself. Then only you are going to be a better yourself. Step number 6 into the self-awareness, and this is the most important step. This is identifying your own body image. अपनी इमेज के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में जानना. राइट डाउन फ्यू एडजेक्टिव्स अबाउट द वे यू लुक. कैसा हमें लग रहा है? आई एम फैट, आई एम नाटा, आई एम गंजा, आई एम हेयरी. व्हाट इज दैट यू आर एबल टू फील? वंस यू आर डन, रिव्यू दिस लिस्ट. आर दीज नेगेटिव और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स? ये नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है? और अगर आप अपने बॉडी के बारे में, अपने बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ट्राई टू कम अप एंड पुट मोर लव इनटू योर बॉडी. क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे अपनी बॉडी के अंदर, जब तक आप फिजिकल फॉर्म में कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे, तब तक आप वो कॉन्फिडेंस अपने बाकी एक्टिविटीज, बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को नहीं दे सकते. कहा जाता है that confidence in your body can transfer the confidence in other parts of your life. तो उसके लिए कॉन्फिडेंस हमारी बॉडी में आना, हमारी लैंग्वेज में तभी आ पाएगा ना कॉन्फिडेंस. अब मैं जाके एक बाउंसर के पास जाऊं और एक पतला सा व्यक्ति बाउंसर के पास जाए, और पतले से व्यक्ति में फाइट करने का कॉन्फिडेंस तो है नहीं. उसे पता है कि मैं पतला हूं, मैं फाइट नहीं कर सकता. सामने हट्टा कट्टा पहलवान खड़ा है, तो वो कैसे कॉन्फिडेंटली बात करेगा? वो डर ही जाएगा ना. एंड इफ ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज बॉडी,
his looks, that yes, I can do anything, that he can talk confidently with anybody in the world. So confidence within yourself is major requirement. Confidence and love towards your body. उसके लिए कॉन्फिडेंस को लाने के लिए सबसे पहले वो नेगेटिव परसेप्शन जो भी आपने लिखी उनको पॉजिटिव पे कन्वर्ट कीजिए. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, हमने देखा है बहुत से एक्ट्रेसेस के चेहरे पे मोल होता है, तिल होता है, और वो उसको एक धब्बा न समझ के they call it as a beauty mark. Whenever they talk in a positive aspect that this is my beauty mark, and then they are confident about that thing. So convert the negative perception towards positive. Consider things that should reasonably change if they make you truly unhappy. उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखिए, उन चीजों को देखिए जो आपको अनहैप्पी कर रही है, जो आपको दुखी कर रही है, और उन परसेप्शंस को, उन चीजों को एक पॉजिटिविटी के लुकआउट से देखिए, पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिव वे आउट दीजिए. तभी आप अपने बारे में पूरी तरह से अवेयर हो पाएंगे और खुशी से अपने आप को जान पाएंगे और आगे के जीवन को सुखमय बना पाएंगे. Coming on to second method of exploring your personality. हम लोग बहुत से रोल प्ले करते हैं अपने जीवन में, और कभी हम बाप होते हैं, भाई होते हैं. If we are male, we are playing role of a father, parent, friend, team leader. या हम फीमेल हैं, we are playing role of mother, sister, भाभी, auntie. We provide emotional support. We are a motivator. Sometimes we are mentors. Sometimes we are mentees. Sometimes, like father of a church, sometimes he is a confident. He is a creator. Sometimes we work as a problem solver. So there are many roles. We need to list ourselves. We need to work on identifying the roles we play and how are our relationships, how are my work responsibilities, and how I take down my responsibility and my role. Second part in knowing your personality is write down your vitals. By vitals, I don't mean the numbers. Vital is an acronym that stands for value, interest, temperament, activities, life goals, and strength. We need to note down our values, interest, temperament, activities, life goals, and strengths. जर्नलिंग की तरह ही इस प्रोसेस को भी हमें एक नोटबुक में करना है. हमें डिफाइन करना है each category of ourselves. Values, like what is important to you. What characteristics do you prize in yourself and others? What motivates you to complete something? जब हमें ये चीज पता लगेगी तब हमें पता लगेगा कि मेरी वैल्यूज क्या हैं, मैं किस चीज को ज्यादा वैल्यू दे रहा हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ना चाहता हूँ. Interest areas are going to be questions like what type of things I am curious about, what is that I like to do in my free time, what fascinates me, which movie I like to watch, which food I want to eat. These are my interest areas. So we need to ask various questions to understand our personality, our arena. Temperament. Can we come up with 10 words which describe my own personality? मैं कैसा लगता हूँ? That can be adjective. मैं कैसे सोचता हूँ? मैं कैसे चलता हूँ? How I carry myself? All these things are going to work onto the level of my temperament. Activities. How do you spend your day? What are the most and least enjoyable parts of your day? हम कई बार कुछ डेली रिचुअल्स करते हैं.
Like certain people like to do puja in the morning, certain people like to do puja in the evening. These are the rituals. What are the activities which I do daily, or what are the activities which I like to do? What are the activities which I totally hate? We need to make note of that. What is my life goal? How I want to perceive my life? What is the most important event of my life? Why that carries an importance? And most important in this is where you see yourself in coming 10 years. Then talking about the strength areas. Strength, we all know abilities. We all know our skills. We all know our talents. What are those areas and what we really are good at? Third step, we all do sometime, either in fun or by going to some psychometric testing or personality assessment test. Though we say that personality tests are not the scientific answers, they are not the reasonings, but still they force us to consider different aspects of our characteristics. They force us to understand the deeper self of our own self. They give us statements where we are going to think that how I perceive myself into a particular situation. And they might be online, they might be either going to some psychiatrist, either going to do some research test. There are Myers-Briggs type indicators, and there is like many, and one I know is like a big five personality assessment test. This one is like predictive index behavioral assessment. Yeah, this is one thing which I like to do, and most of you who know me, I tell them to tell how they feel about me. When I say that how you feel about me, I doesn't mean that I'm going to change by your perception. But this is to understand that how I am going in my life. Asking other people, inviting them to commentary about myself is not to define myself, but it is by, I'm not going to change by their opinion, but it is a way to understand things about myself from other people's. What I might have missed out about myself, what I am bringing on the changes. Somewhere I might not be missing something. This can be done starting by asking your near ones, your loved ones, that would they like to define your personality or characteristics? Sometimes if you are so cozy and comfortable with your boss, you can ask your boss, mentor, or acquaintances about what thing they see in your personality, how they perceive you. And if you are in disagreement with anyone's observation, that's okay. You don't have to comment, you don't have to define you by them. These comments are not actually definition about you, but you need to understand and find more acceptance from other people so that you can bring changes. So inviting commentary doesn't allow you to define yourself or something like that, that oh, they say that thing and now you are like not a good person. But this is a way to know your own self, bring out those changes and help yourself. This is a way where we reach to the step 5 and the final step in this personality analysis, where we are going to measure the satisfaction with the results. Satisfaction that I wanted to be like this, and results I am achieving the same thing. So this is about the personality and characteristics. Review what you see, and if you're happy with yourself, then you are bang on. If these values and traits are not in alignment, then you need to bring up the changes to work on to those areas.
If there are areas to improve, you need to use your own knowledge of your own self. Again, I am saying this is the way to know your true self. Then, when we are working on our own true self, then we need to use these areas to improve ourselves. Method 3. We all do this thing. We all try to fulfill our needs. But again, fulfilling our needs can be a dangerous method because we might be trying to copy somebody, and while copying somebody, we might be trying to fulfill the needs which that somebody is bringing to me. तो इसको कैसे जाना जाए? इसको जानने के लिए स्टेप नंबर 1 is practicing self-care. Give some time to yourself. हम लोग आज एक भाग दौड़ भरी जिंदगी में जी रहे हैं. We are living with stress. We are living with too much of work, and it is really hard to find time and reflect on your own self. क्या हम अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं? क्या हम अपनी बॉडी के प्रॉपर टेक केयर कर पा रहे हैं? Are we giving physical time to our body? Are we providing the self-care rituals for our body? क्या हम स्पा में जा रहे हैं? स्पा में जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को फील गुड करा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं? क्या हम एक हेल्दी स्लीप ले रहे हैं? 7 से 9 घंटे की स्लीप कहा जाता है कि हेल्दी है. क्या हम हेल्दी खाना खा रहे हैं? कहीं हम जंक फूड पे तो नहीं आ रहे? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड डेली वी नीड सम टाइम to relax. We need some time to do some activity which are going to unwind our mind, like knitting, puzzles, reading a book, drawing, dance, or any other artwork where we can actually unwind our true potential. These are the steps for practicing self-care. Second step comes where we need to create a good work-life balance. क्योंकि आज हम कॉपी कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अच्छा प्रतीत करा सके लोगों को. वी आर ट्राइंग टू प्लीज पीपल. वी वांट पोजीशन इन आवर लाइफ, कैरियर एडवांसमेंट की तरफ भाग रहे हैं. बट क्या हम एक वर्क और अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस, सामंजस्य बैठा पा रहे हैं? Today, we are working in work from home. और वर्क फ्रॉम होम में आने की सिचुएशन के बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि वो बैलेंस जो था जो हम कहते हैं पहले कि काम को घर ना लाओ, अब तो ऑफिस ही घर आ गया है. तो जब ऑफिस घर आ गया है तो हमारे लाइफ में कितना बैलेंस खराब हुआ है. सॉरी, कितना हम लोग अपने आप से अलग हो गए हैं, कितना समय हम अपने आप पे दे रहे हैं. टेक सम टाइम ईच डे टू फोकस ऑन अदर गोल्स एंड हॉबीज एंड इंटरेस्ट. वर्क इज इम्पोर्टेंट, बट यू शुड बी एबल टू मेक वेलबींग अ प्रायोरिटी. जब तक हम अपनी प्रायोरिटी नहीं सेट करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, जब तक हम अपनी प्रायोरिटी नहीं सेट करेंगे तब तक हम अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस नहीं ला सकते. हमारे को अपने रिलेशनशिप्स में भी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती हैं, सो दैट माय वर्क इज नॉट इम्पैक्टिंग और इंटरफेयर विद इन माय रिलेशनशिप. कितना वर्क में कर रहा हूँ, कितना समय मैं काम पे बिता रहा हूँ. आज की डेट में क्या हो रहा है, हम घूमने जा रहे हैं, लैपटॉप साथ जा रहा है, मोबाइल साथ जा रहा है, बात कर रहे हैं हम शादी में जाने की, छुट्टी मनाने की, और हम अपने लैपटॉप पे नॉन अर्जेंट मेल्स को भी आंसर करने में लगे हुए हैं, बिकॉज वी मेक ऑफिस आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. Then why we are taking this break? What we are trying to do? When we are in our personal zone, then we should keep the work aside, or when we are in the work zone, we should keep our personal life aside.
हमारे को अपने रिलेशनशिप में बाउंड्रीज बनानी पड़ती है. दिस इज द थर्ड स्टेप, because we all need to understand the limits. When we set the limits that make us happier in life, happier relationship is going to bring a happy me. We need to understand, when we say we need to establish boundaries, that doesn't mean कि ये रूम मेरा वो रूम आपका, हमें ऐसे हम उस रूम में नहीं जा सकते. बट हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी इंट्रैक्शंस हैं जो हमारे को अनहैप्पी करती हैं, कौन सी ऐसी इंट्रैक्शंस हैं जो हमें अनकंफर्टेबल करती हैं, स्ट्रेस करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं. हाउ वी कैन सेट दीज पर्सनल बाउंड्रीज दैट वी आर नॉट एंटरिंग दोज एरियाज. What are the situations where I am uncomfortable? Like, I don't like the crowds. Or there might be certain kind of language which you cannot take, which unsettles you. And if there is somebody in your life who asks too much of you and those things which you don't want to do, then identify these requests and demands which you are unwilling to do, and set a boundary that you are not going to answer these things. Say no to those things. Because when you say no, you don't have to be a yes man every time. You need to understand your boundaries. आपकी बॉडी कहाँ तक सहन कर सकती है, आपका इनर सेल्फ कहाँ तक एक्सेप्ट कर सकता है, और उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए. Step 4. Set goals that make you happy. That is some of the thing I want to do. Setting goal will help you achieve what you want out of life. हम क्या करना चाहते हैं, क्या चीज चाह रहे हैं, कैसे करना चाहते हैं. Like money. Money makes me happy. Aim for goals that will make you happy, not goals motivated by external desires. First of all, money और प्रेस्टीज अगर आपको हैप्पीनेस देगी, तो वो मनी क्यों हैप्पीनेस दे रही है? मनी हैप्पीनेस दे रही है. Either you want to work with that money into some level, you want to utilize that money for something, or you want to have pride in you. So you need to understand the difference. You can do this by simple writing a 500 words a day. एक छोटा सा गोल लेते हैं 500 वर्ड लिखने का. अब हम उसके आगे सोचते हैं कि ये मैं क्यों लिखना चाह रहा हूँ. ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे लिखना पसंद है, या मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे को एक फेमस राइटर बनना है. फेमस राइटर बनना एक प्रेस्टीज, एक प्राइड हो गया ना. लेकिन मैं अगर इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे लिखना, तो मेरा लिखना बहुत आसान हो जाएगा. You can add some small goals. मुझे आज भी याद आता है saying of धोनी, that when I see a scoreboard, I break that scoreboard into various small targets. कि मेरे को first 50 complete करना है, then I will go on to this 100, then I will go on to 200, and so we achieve the goal and win the games. And we see Dhoni as one of the best captain for Indian team. So it is what we are making a goal with. What makes us happy? The happiness for Dhoni was in winning the game, and he wins the game. So set goals that will make you happy. Then revise your wants and needs periodically. मोमेंट के साथ, पीरियड के साथ, टाइम के साथ हमारी नीड्स, हमारी डिजायर्स चेंज होती हैं. तो हमें उनके ऊपर रेगुलरली काम करना है. हमें अपने लाइफ के एस्पेक्ट्स पे काम करते रहना है. हमें देखते रहना है कि कहीं हमारी डिजायर्स चेंज तो नहीं हुई, कहीं कुछ ऐसा नया तो नहीं है मेरी लाइफ में जो एक चेंज की रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, या प्रायोरिटी चेंज हो गई है, मेरी पोजीशन चेंज हुई, शायद प्रायोरिटी भी चेंज हो गई हो, मेरे को उसके अकॉर्डिंगली काम करना हो. एंड इट इज लाइक यू आर मेकिंग योरसेल्फ अ फ्रेंड ऑफ योर ओन सेल्फ. जैसे कई बार हमारे ओल्ड फ्रेंड्स कहते हैं ना, यार
अब हम ये चीज़ चेंज कर लेते हैं। जैसे एक फ्रेंड चेंज कराता है, वैसे ही हमें अपना एक बहुत अच्छा फ्रेंड बन के अपने आप को चेंज करना है। और उसके लिए हमने जो जर्नल लिखा है उसको टाइम टू टाइम गेज करना है, उसको समझना है, अपनी हैबिट्स को नोट करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को नोट करना है। एंड दिस इज द वे वी आर मेकिंग आवर सेल्फ, आवर नीड्स एंड डिजायर्स, वी आर मेकिंग आवर सेल्फ अवेयर ऑफ आवर ओन सेल्फ. So now as we know the value of self and way to know our true self and how to work towards gaining the depth of ourself, we look forward to empowering ourselves and bringing a better version of our own beings. हमने यहाँ पे आज कुछ नया नहीं बताया, बस कुछ उन्हीं बातों को, पुरानी बातों को दोबारा से दोहराया है. As we say, we are serving an old wine in a new bottle. Me, Gurdeepndhillon, with the promise of coming again next Tuesday with another exciting topic. Signing off from here, wishing you the best of health and self-care. All the best, my friends. See you next Tuesday.